हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे चैनल द देसी इंडियन में। आज है 11th ऑफ सितंबर और आज के दिन स्वीडन में इलेक्शन है। इलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए भी इलेक्शन है और उसके अलावा जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन है वो भी आज के दिन ही हो रहे हैं। उसके लिए वोटिंग भी आज ही है। नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ स्वीडन, मैं फिर भी इलेक्शन में वोट कर सकता हूँ और ये मेरे को भी 2-3 हफ्ते पहले ही पता चला है, क्योंकि मेरे जो लोकल स्वीडिश वोटर आईडी कार्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वोटर आईडी कार्ड जो है वो आप देख सकते हो। ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ये रोस्टकॉट का मतलब है वोटर कार्ड। और ये मेरा सेंटर है जहाँ पे मैं एक्चुअली, ये स्कूल है पास ही में 500 मीटर्स है और यहाँ पे मैं वोट डाल सकता हूँ। और मैं खुद से सरप्राइज था कि मैं वोट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमने सुना है कि अगर आप जब तक सिटीज़न नहीं हैं किसी भी कंट्री के, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तब तक आप वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कैसे वोट डाल रहा हूँ। देखते हैं जाके और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैं वोट डाल सकता हूँ। इवन आई एम एक्साइटेड और वोट डालेंगे और आपको बताएंगे। अगर अलाउ किया उन्होंने अंदर वोटिंग का, जैसे अगर अंदर मैं पोलिंग स्टेशन में गया, अगर वो भी हुआ तो वो भी आपको मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और चलते हैं फिर साथ में आपको दिखाते हैं स्वीडन में वोटिंग कैसे होती है। तो जी हो गया रेडी और निकलते हैं। पास में ही है घर से, 500 मीटर की वॉक है सिर्फ। और आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकली अच्छी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया हुआ, सर्दी हो गई है। बस उसी तरफ है, वहाँ से पीछे वॉक करके 500 मीटर पे चलते हैं फिर। लाइन तो लगी है लेकिन काफ़ी छोटी लाइन है, बस वो अंदर वहाँ से एंटर है और हम भी लाइन में लग जाते हैं अब। तो ये अलग अलग पार्टीज़ के, और आप जिसको वोट करना चाहते हैं और आप उसके लिए उनको वोट डाल सकते हैं। Yes, so you can get the envelopes from. So I don't have to write anything, or No, there's no. You don't need to write Okay, anything. so You just put one in Each in envelope. each envelope. Okay. Yes, go behind the white. तो जी 2 एनवेलप मिले हैं। इसके अंदर जो मैंने 2 उठाए हैं वो उसको रखना है। आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये 2 मैंने उठा लिए हुए हैं जिस पार्टी को मैं वोट करना चाहता था। बस आपने 2 चूज़ किए, क्योंकि मैं सिर्फ आई एम नॉट अ सिटीजन, तो मैं सिर्फ लोकल म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में ही वोट डाल सकता हूँ। तो मैंने वो पिक कर लिया। तो फर्स्ट टाइम वोटेड। Hi. I speak English. Do you know which queue you're going to? So 144. It's here. Welcome. Yeah, thank you. Welcome. Och så får jag ta ditt... I speak English. Yeah, okay, yeah. Do you have an ID? Yeah. There are 6. Tack så mycket. Manish Jamal. Yeah. Yeah. You are allowed to vote in 2 of the elections. Yeah, I have 2 You have envelopes. 2 Yes, envelopes, yes. Yes. Perfect. Then it's done. Take this with you home because Is it's it- your personal number on it, so don't Yeah. throw it in the bin. Yes, and what the reason is that it is very important to give your vote and tell the government
what you think is the best for the future for the country. So that's why I vote, of course. Yes, yes, I think it's important with the economic situation, with the prices now in the electric prices are high in our country as in many countries and so, and and also we like to have this freedom in our country also to choose. You can choose the school you want to have, and so it's important for us to have a government that want to have that kind of, that you can choose what is best for your family and so. So that's what is, I think is important, to have a freedom, the monarchy. Yes, my mindset, it's a very nice day to celebrate democracy in the sense, so it's always a special feeling to go and to vote and to be able to influence the politics in the country, so it's a bit of a celebration day, I guess. Okay, and what do you think that the previous government has done good for the country? Have they done better as per your expectations? Well, it was big negotiations after the last elections, and the government, I guess, have had problems during this period to keep themselves in government, and they have to compromise a lot. I think how they reacted to the corona pandemic, they did it very well, and they didn't do any hasten fast reforms or measures. They fought it through and listened to the experts. One last question to you. What do you want from the elected government that they should do in future for the betterment of the society and the people of Sweden? To put more attention to the environmental problems we have and the climate change. I wish they will spend a lot of money on trying to change the course that we're going towards today. So for me, it's environmental questions in general. I hope they will do a lot in that area. I think that citizens, we need to take opportunities like these ones very seriously, because it's the way that we can influence politicians, and it is an act that is going to impact our future, our immediate future, but also long-term future. So it's really important that we all engage and participate. And the next question is, like, what do you think that the previous government has done better? I think that it was the handle of the pandemic was really well done, because they rely on expertise. They didn't take any rush decisions, so I really appreciate that they listened to the experts. That was great. And I also think that the government has been good in defending the aid budget. That is really good, that we don't only need to think about citizens here in Sweden, but worldwide. And Sweden has been a really solidarity government, and it should be like that in the future. My main thing was to keep the Sverigedemokraterna out, because there's such a big split in Sweden about it, and so it was important for me to be part of that. So it's kind of difficult for me to compare what they've really done, and because I moved here about 3 years ago. But I mean, I think the biggest thing is they got us through a pandemic. So again, it's kind of difficult to kind of gauge how it's been. But my main problem at the moment with the Socialdemokraterna is that they are buying into narratives from the right wing, from Moderaterna and SD and Liberalerna. So I'm a little bit disappointed actually by the current government. What do you think that there was? What was their approach during the pandemic, and did they handle that pandemic well? Because many countries criticized like the Sweden approach to the pandemic, and what is your opinion about that? It's difficult because I think other countries did have lockdowns, and such as the UK, but then hundreds of thousands of people still died in the UK, and I think the kind of final tally of deaths, if you want to call it that, was kind of in the middle somewhere in Sweden. So Sweden kind of took a middle approach in a way, and it was tricky. I know that a lot of my friends are also from overseas, and we were quite
negative about the way that Sweden approached it to begin with, but over time I think we kind of felt it was actually it kind of felt like we found the right approach actually. Yeah. And what do you think and what you want from the elected government which is elected after this elections, and what do you think that they should do better for the society and the people living in the country? I think the biggest thing is inequality in Sweden, which is that for me as a foreigner coming in, Sweden still has this idea that everyone is equal, and over the last 10-20 years I think ultimately actually since the last Conservative government here, Sweden has become much more unequal, and so the narrative coming from Moderaterna, from Socialdemokraterna, from the kind of right-wing parties has been all around punishment, really old-fashioned ways, and also around the negatives of migration. And for me as a migrant from a multicultural society, I would like to see the next government talking more about how you erase inequality. It's inequality that causes violence, it's inequality that makes sure people don't have choices. So I'd rather they talked about how can you avoid those things at the beginning in terms of schools, in terms of housing, than the punishments which kind of the right wing are really looking at. तो जी, जैसे कि आपने अभी देखा, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। आपको कोशिश की कि मैं लोगों के ओपिनियंस बताऊं, तो काफ़ी अच्छा रहा और मैंने भी वोट डाल दिया है और देखते हैं अब कौन सी पार्टी आती। तो जी, वेलकम आपका दोबारा से। और आपने देखा पीछे वीडियो में कि मैंने वोट डाला और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की आपके साथ कि कैसे स्वीडन में वोट डाले जाते हैं और वो कैसे डिफरेंट है कि आप जब इंडिया में वोट डालते हैं। इंडिया में आजकल ईवीएम यूज़ होती है वोट डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आज भी बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है। और मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पहले कभी बैलेट पेपर से वोट नहीं डाला है। और आपने पीछे वीडियो में देखा, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहा और काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। और मैंने भी वोट दिया इस बार, और मैं खुद शॉक था कि कैसे मैं वोट कर सकता हूँ। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेक की, तो मेरे को पता चला कि जो स्वीडन में पिछले 3 साल से रजिस्टर है, उनकी पॉपुलेशन रजिस्टर में, तो दे आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन लोकल बॉडी इलेक्शन। जो नेशनल इलेक्शन थी, जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए इलेक्शन थी, मैं उस पर वोट नहीं कर सकता था। लेकिन जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें काउंटी में रहता हूँ, उपसाला काउंटी में, तो मैं उसके लिए वोट कर सकता हूँ। और जी, इसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन सी जो मेजर पार्टीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए हैं। जो भी सबसे पहले तो ये है जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, जिनकी करंट प्राइम मिनिस्टर है मागदलीना एंडरसन। इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, जिन्होंने अपना ऑफिस संभाला था नवंबर 2021 में, क्योंकि उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे सोशल डेमोक्रेट्स के ही थे, स्टीफन लोफवेन, जो उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया था। तो अभी भी जो रेस में है, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो आप ऊपर टॉप पे देख सकते हो सोशल डेमोक्रेट्स इस टाइम जो काउंटिंग के हिसाब से जो पार्टी सबसे टॉप पे है वो वही है मागदलीना एंडरसन, जो सोशल डेमोक्रेट्स के हैं। उसके अलावा दूसरी जो है द स्वीडन डेमोक्रेट्स है, उसके बाद द मॉडरेट्स हैं, और उसके बाद बाकी सारी पार्टीज़ के अलग अलग इस टाइम आप देख सकते हैं। तो इस टाइम में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी काउंटिंग चल रही है, और ये अभी फाइनल जो है मेरे ख्याल से कल तक जो भी है रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, और देखते हैं कौन इस रेस में आगे है सबसे। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि स्वीडिश पार्लियामेंट में टोटल 349 सीट्स हैं, और उसमें 175 जो है फुल मेजॉरिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।